क्वेश्चन नंबर 183 श्री अमरा राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 183। माननीय मंत्री जी। पटल पर रख दीजिए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सारा समूह और पीएससीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया था। जहाँ सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोर संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहाँ तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 15,000 करोड़ से ज्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा है? इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781,000 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करे, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। और जहां तक सवाल है कि लगातार विज्ञापन देने के बाद भी कोई भी निवेशक उसमें आवेदन करने नहीं आ रहा है, इसलिए सेबी पुनः वहां पर गई सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री और हमारे कॉर्पोरेटिव मंत्रालय के अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार की जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारे सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है। उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफर किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 5,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव मंत्रालय को ट्रांसफर भी किया, जिसमें अगर आप देखें वो भी पूर्व न्यायाधीश R सुभाष रेड्डी के निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 तक 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके हैं। और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो वो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का पैसा उनको वापस कराया जाए। महोदय, मैंने तो 0.8% पूछा था कि सहारा और पीएससीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का किया था। मंत्री जी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मैं धन्यवाद के लिए नहीं, प्रश्न मैंने पूछा कितने राशि निवेश की और कितने लोगों ने दोनों कंपनियों में की थी। सवाल ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दे रहे मंत्री महोदय। जहां तक मैं समझता हूं सेबी सरकार की आप पीठ थपथपा रहे हैं। सेबी और सरकार ने उस कंपनी को ही कहा है, कंपनी को कहा दूध की रुखवाड़ी बिल्ली को छोड़ने का काम किया है कि सारा इंडिया लोगों के निवेश के पैसे लौटा देती तो स्थिति क्यों होती। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, एक तो कितने लोगों की जेब काटी है सारा इंडिया और पीएससीएल ने और कितने राशि की, और 12 साल के बाद में भी केवल कुछ ही 15,000 करोड़, क्या सारा इंडिया की संपत्ति जो सर्वोच्च न्यायालय ने 25,700
करोड़ से ज्यादा राशि जमा करने के, क्या सारा इंडिया की कोई संपत्ति नहीं है जिसे 25,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए अभी तक जमा नहीं हुए और उनको नहीं बटा? 12 साल के बाद में भी केवल 138 करोड़, जो 15,000 करोड़ में से 138 करोड़, इससे ज्यादा और सरकार की विफलता और क्या होगी? माननीय मंत्री जी। Sir, MOS Pankaj Chaudhary tried to give the details. I just want to put the entire Sahara matter before this Honorable House in all its dimensions. If you will indulge me a bit more time, I'll be able to, I'm not taking too much time, but I'd like to put it into 3 different categories. That which comes under the SEBI's regulations. Now, first of all, everything to do with Sahara is being monitored by the Supreme Court. There are some which come under the regulator SEBI. There are some which are being dealt with by the Ministry of Cooperation. So I want to be clear when I convey this thought that everything is being monitored by Supreme Court. MOS was right in saying those which come under the SEBI are actually 3 entities of the Sahara. Sahara India Real Estate Corporation Limited, Sahara Housing Investment Corporation Limited, and Sahara India Commercial. Now, the Supreme Court order of 2012 does say the estimated amount is 25,781.37 crores. But estimated number of the investors or depositors also estimated again at 3.07 crores. MOS rightly said that in spite of the attempts made by the SEBI advertising in 2013, advertising in 2014, and again in 2018 saying on 2nd July that this is the last time, please, whoever wants to claim, come over. 3 publicly announced attempts to get people to come and claim the amount so that the disbursal can happen. And this entire effort is being monitored by retired Justice B.N. Agarwal, retired Justice from the Supreme Court. So in this matter, sir, the monies which are being given after scrutiny of the applications. Number of claims, sir, 19,650 claims came, of which the Justice B.N. Agarwal committee, looking at its eligibility and everything, 17,256 claims only could be entertained, and that resulted in only 138.07 as the amount which is being claimed, which is given. Yes, we are talking of a 25,000 crore estimated amount, but claimants are only this many. So repeated attempts by the Supreme Court to go for advertisements are not yielding results in this particular SEBI-related 3-company case. Sir, in general, the honorable member asked, are there no properties of the SEBI which cannot be, auctioned out and money paid? Yes, of Sahara, which SEBI can auction and reclaim the money. First of all, sir, yes, there are 8. Sorry. Sir, 18. Sir, first of all, the 25,781 crore is not fully distributed. That is one thing. Second, Sahara India Commercial, sir, 18 properties have been attached. The matter is I'm dealing with all the SEBI-related matters, and I'm saying, yes, 18 properties are there. And now, even if auctioned, the money will only go to that pool which is yet waiting to get distributed. So that is one aspect we have to keep in mind. The second, sir, is the one which, after the cooperative ministry has been formed, Ministry of Cooperation has been formed, then the government approached and Honorable Supreme Court gave an order that some amount from the SEBI, that amount which is sitting in SEBI, some of them can be given to Ministry of Cooperation, which can then get distributed for the cooperatives related. There are 4 cooperatives of the SEBI, of the Sahara. Sahara Credit Cooperative Society, which is registered in Lucknow. Hamara India Credit Cooperative Society Limited, which is registered in Kolkata. Sahara Universal Multipurpose Society, registered in Bhopal. So, and then Sahara Stars Multipurpose Cooperative Society, registered in Hyderabad. For all of them put together, the total estimated amount
is 86,673. All right. For all the four, sir, Justice R. Subhash Reddy, retired judge, is looking at it, along with amicus curiae Gaurav Agarwalji, along with the Central Registrar of Cooperative Society, who is sitting as a joint secretary in the Ministry of Cooperation. All three of them together form a committee, and they are the ones who are looking around for the claims which are coming, eligibility of the claims, and then giving them the money. Number of claims, 1.21 crores. How much is the amount claimed? Amount which is estimated as claimed is 86,000. But how much could be released, because the claims have to be legitimate? 374 crores released to 4.36 lakh depositors, with 1.27 lakh depositors whose claims are only up to 10,000 rupees. Only 10,000 rupees or below, people have already been given whatever their claim is, 10,000, 8,000, 9,000, whatever the individual claim is. So that way, there is this committee headed by Justice Subhash Reddy, along with two other members, who are looking at those aspects of cooperation related, the four cooperatives which were under the Sahara. And the final, sir, the Pearl Agro Corporation Limited, which is also linked to Sahara, here, sir, 49,000 crores is what is the estimated amount which will eventually have to be distributed. Now, how many estimated number of, the honorable member kept asking, what is the number of claimants? What is the amount? We are giving you that. They're all estimated numbers. I don't know if there'll be more or less. Estimated number for this one institution, Pearl Agro Corporate Limited, is 5.8 crore estimated number of investors. Now, amounts claimed till now, sir, number of claims which have come, 1.5 crore. And till date, claims are being sought in phased manner from people. Okay, online processes are happening, referred. Yes, but the variety of questions which are coming, I thought it will be of interest for several members. So I'm seeking the time of the honorable speaker. If he wants me to sit down, I'll sit down. I have no problem, sir. Refunds, sir, the refunds, online processes of claims and refunds. I'm giving you one account. Refunds of 1,021 crore to 20.8 lakh claimants with claims, and here each claimant could have up to 19,000 crores. He may be 10,000, 12,000, 15,000 or 2,000. Up to 19,000 crores jitne bhi claimants hai, they are 20.8 lakh claimants, for whom 1,021 crores have been distributed. Justice retired R.M. Lodaji is looking at this. He is a justice looking at it and reporting to Supreme Court. So we would like more claimants to come. There is a portal created by Ministry of Cooperation saying, please put your names for those four cooperatives-based organizations. Go to that portal, register your name. That committee of 3 people, inclusive of a retired judge, will look into the claims and money will be distributed. But we are seeking more claims, sir. I would request all the honorable members, if they have people who are approaching them, to please come. Put a legitimate claim, show the papers, take the money. We are waiting to clear it. But I just want to dispel this thought that Government of India is not doing anything. We are constantly reporting to the Supreme Court. 3 panels of retired Supreme Court judges are monitoring us. They are approving every claim which is getting money back. So let us not in this house have a doubt about the intent and the interest with which the central government is working on this.